सकता है सर। किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी, कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ। इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर, कौन दामाद, कोई भी दामाद हो सकता है। इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर, मेरा भी दामाद हो सकता है। 12 ब्रांसन स्क्वायर थम्पी ने, जिसको थम्पी ने, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब जरूरत होगी तुम आ जाना। आप समझिए कि वो भाग गया। उसने कहा कि 12 ब्रांसन स्क्वायर जो है हमारा है। उसी तरह से संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें यह बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है। आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को बेट करना है। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ, न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी, मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारत साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले। यदि हमने सीपीएम के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने सीपीएम के साथ समझौता नहीं किया। आज तक हमने समझौता नहीं किया। यदि हमने कहा कि कोई मुस्लिम लीग जिसने कि भारत विभाजन किया, आज तक वोट बैंक की राजनीति के बाद हमने मुस्लिम लीग के साथ नहीं लिया। लेकिन आपको जिस कांग्रेस पार्टी ने रोज रोज जलील किया, उसके साथ आप किस आधार पर जो है शासन में हो? मैं आपको बताऊं, मैं आपको अध्यक्ष जी, समस्या क्या है कि हमने जो है एक क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गरीब के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। एक विकास की पट्टी देखकर आपने अभी पूरे पार्लियामेंट को देखा कि किस तरह से परेशान हुआ। कारण क्या है सर? मैं जिस इलाके से आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या और इतना बड़ा बखेड़ा क्यों। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां संथाल पुराना इलाका है। यदि रात हो जाए, तो यदि कोई बीमार हो जाए तो उसको गंगा नदी टपने के लिए कोई पुल नहीं था। आजादी के 75 साल बाद आज वो पुल बन रहा है साहबगंज का। झारखंड इस देश में सबसे ज्यादा माइंस और मिनरल्स देता है। 40% से ज्यादा माइंस और मिनरल्स इस देश का झारखंड में। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा विस्थापन, सबसे ज्यादा पलायन उस झारखंड में। आज आप समझिए उसका कारण यह था कि हमारे पास कोई पोर्ट नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मल्टी मॉडल हब पोर्ट जो है साहबगंज में गंगा नदी में बना है। मैं जहां से सांसद हूं सर, 75 साल में वहां के लोगों ने रेल नहीं देखा। आज जो है, मैं गोड्डा की बात कर रहा हूं, गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, गोड्डा जो मेरा नाम है, मैं आपको बताऊं सर, 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा।
आजादी के 75 साल बाद आज वहां रेल है, उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ आई थी। आज ये सिचुएशन है सर। ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं सर, पोजीशन की बात करते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं एक ऐसा बदनसीब आदमी हूं सर कि जिसकी अपनी छोटी बहन इलाज के बिना मर गई। 93 में मेरे यहां कोई डॉक्टर नहीं था जो पेट दर्द का भी इलाज कर पाए। 93 में मैंने अपनी छोटी बहन को खोया है सर। आज उसके भाई होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री, देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है, वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं। यह विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है सर। इनका विरोध यह है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका यह विरोध है सर। इनका विरोध यह है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है। इनका विरोध यह है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात महाभारत से खत्म करना चाहता हूं। महाभारत का एक बड़ा कहानी है सर कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरे, चाहे कौरव पक्ष के लोग हों चाहे पांडव पक्ष के लोग हों, वो सभी जो है चीरहरण को देख रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोग नहीं समझेंगे सर, ये लोग इसीलिए नहीं समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं ना तो इनको लगता है कि परिवार की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार की बात नहीं करते हैं। वकील बेटा वकील हो जाए क्या दिक्कत है। IAS का बेटा IAS होता है सर। यहाँ DG हैं RPF के, वो IPS भी हैं, उनके दोनों बेटे IAS बने सर, जो अपनी योग्यता क्षमता के साथ आते हैं। परिवार को वो क्या करते हैं, आज मेरे यहाँ का नेतृत्व क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से, माननीय नड्डा जी ये हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं था। माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, एक कॉलेज में जो है पढ़ाते थे सर, और आज समझिए कि इनको भगवान ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है सर, के आगे पीछे जो है कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारे जैसे लोग हैं, क्या है कि यहाँ जितना परिवार है ना वो इनके पीछे हैं जो कि परिवार का आदमी नहीं है। और वहां समस्या ये है कि वो सभी परिवारवाद जो है वो उनका जो नेता है, इसीलिए उनका परिवार और परिवारवाद में फर्क है, उनको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारे तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। सर रूल TR बालू जी, सॉरी TR बालू जी,
अरे बालू जी को बोलने दो, टीआर बालू जी, मैंने अलाउ नहीं किया बालू जी, आप अलाउ सर निशिकांत दुबे ने मेरा नाम लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, बता के काफिला कैसे लुटा। भारत माता इतना पेटेंट नहीं है, भारत माता 140 करोड़ लोगों की भारत माता है। ये गलत नैरेटिव चलाते हैं, ये नारी विरोधी है, इन्होंने का अपमान किया। निशिकांत दुबे ने अभी अभी नारी अपमान किया। ये वो व्यक्ति है जो टीआर बालू जी, ये वो व्यक्ति है जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आदिवासी लोगों से पैर धुलवा करके अपराधी गिनाते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने आदिवासियों से अपने पैर धुलवाए और उसको पानी पिलवाया। सर ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो आपका रिकॉर्ड नहीं जा रहा। ये वो व्यक्ति है जो आदिवासियों से पैर धुलवा करके पानी पिलाते हैं। सर मणिपुर पर चर्चा नहीं की और ये जो है नफरत, टीआर बालू जी, यहाँ पर भी नफरत फैलाने का काम किया है इसने। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. I support the no confidence motion on behalf of. First of all, I start with Mr. Niशिकांत Dubey, who has ended his speech with reciting Mahabharata. I am also reminded of a particular episode wherein Krishna has advises Arjun to throw their aims his bow towards his grandfather, kith and kin, friends, and everybody. That was a story in the epics. But what is the end result of the Mahabharata? Finally, they lost it, and King Arjun, Dharma, and other people won the case. He has recited about Draupadi and other people. So what has happened? Finally, that is the end result. That is most important as far as that epic is concerned. I am also not willing to oppose my old friends. They are all very close friends, especially my friend, the leader of the house, Mr. Modi, and other friends also. They are the first friend everywhere. They are my friends, prevailing over the. I am rather hesitating to oppose them because of the only reason it was led by the late lamented leader Vajpayee. That was the only reason. And at the same time, now I am opposing. Now I am supporting the no confidence motion means because we want to kill the evils. Krishna advised Arjun, you are not going to kill your kith and kin and friends. You are going to kill the evils only. The same thing I am doing, sir. There is no other way for this, sir. Sir, moving no confidence motion against the brutally majority government. It is not fair on our part. It is not all fair. And moreover, it is at the fag end of the parliament, this parliament. It is not fair on the part of the opposition to bring the no confidence motion, sir. But there is no other reason because Prime Minister is not coming. Prime Minister has been elected member of parliament and nation's Prime Minister to attend the government parliament only. He has not come so far. That is why there is no other way to bring the Prime Minister to this house. That is why a no confidence motion has been filed by the India opposition. Sir, to start with Tamil Nadu, he is making the stepmotherly attitude towards the Tamil Nadu, sir. What he has done,
just before the 2019 election, James was laid by the same Prime Minister. Even after 5 years, they have not done even single brick over the first brick. They have not done it. Sir, he has promised 2 crore job every year. By this time, 18 crore job would have been created. Nothing, he has not done. Sir, he has promised 15 lakhs per head. But he has not given even single rupee. To the house. Sir, he has promised jobs, lakhs and lakhs of jobs to our young men. Even he has abolished 5 crore jobs in the Manrega. And moreover, over 46 years, the unemployment is still prevailing. He has not done it. He has failed to do that, sir. Sir, wherever he goes around the world, he talks about Tirukural, he talks about Tiruvallur and so on, sir. But he is not making the rightful thing to Tamil Nadu, sir. Sir, 2,000 crores out of 50 lakhs, 2,000 crores out of 50 lakhs budget, can he provide to Tamil Nadu for the construction of AIIMS, sir? Just now, the other friend has said, there are lots of AIIMS have come throughout the nation, but nothing has happened in Tamil Nadu. Is it fair on the part of the Prime Minister to go, what to get out of him, sir? Sir, and they say the money has to, for the AIIMS, this AIIMS alone. For the Tamil Nadu AIIMS, the money has to come from Japan. Is it not shameful, sir, on the part of the Prime Minister? Sir, out of 41% of the allegation, we are getting only 20% against our exchequer income, exchequer payment from Tamil Nadu, sir. Sir, some years back, the late lamented leader Rahul Gandhi ji and Jayawardene had made an agreement. Rajiv Gandhi ji and Jayawardene made an agreement. In the 13th amendment of Sri Lanka should be taken care. And unless otherwise 13th amendment is made up, there won't be peace in northeast of the north and east of Sri Lanka. That is what both the leaders have agreed and signed in the agreement. That agreement has not yet been placed, not yet been retrieved from the cupboards of the Sri Lankan government. They have not done it. But every now and then, government of India is helping the Sri Lankan government often and often, sir. They have miserably failed to retrieve back the Kachetiu. It was owned by Ramanathapuram, king of Ramanathapuram, anciently, sir. They have not done it, sir. Women reservation, they are simply keeping quiet, and the women folk of India is cursing him. But for that purpose, he has to go. Sir, say this Samutram. Yes. Say this Samutram is just, they kept it in the cupboard. Only reason is, Madam Sonia Gandhi ji and Dr. Kalaiya Karunanidhi came to the function in the forefront. They said in the forefront, that's all. It was laid, the foundation stone was laid by Dr. Manmohan Singh, overwhelmed by the whole of the world. Just on the laying of the foundation stone, the whole world appreciated 160 years old project, sir. That has not, in the middle of the project, they have stopped it because Sangh Parwar has stopped it by a court order. Sir, who has created the route? The route was created by Vajpayee ji only. Line, alignment, everything was laid by Vajpayee only. Child. But it has been brought up by Dr. Manmohan Singh and Sonia Gandhi ji and Dr. Kalaiya Karunanidhi. Because they have brought up, only 30 kilometers is pending, sir. Otherwise, it would have been completed by 3 or 4 months. Say, shameful on the part of this government. This government should go immediately because all the Tamils, in spite of his recital of Tirukural, the Tamil
People won't forget him. Let him, he will face the sequence. Yes. Sir, the government has promised MSP. Only 700 people have been killed in Delhi. MSP has not come to the reality so far, sir. 15 lakhs, 2 crores, all are as history. And prices, the petrol and diesel. So what is the international price of crude oil? $88. $88. What is of petrol and 100 rupees and 103 rupees? So this is not fair. But what has happened in those period, during UPA period, it was 60, 65, just like the only. At that time, the diesel price, what is that? Crude oil price was only 80 rupees. Now $80. What is happening now, sir? Sir, 155 lakhs government loan is there. Now, what was the UPS for only 55 lakhs, sir? That is why we are opposing this government. Fourth, we have to get out of this government, sir. Governance, sir. Coming back to treatment meted out by minorities. Minorities of Manipur have been killed ruthlessly, sir. Shame. Sir, what has happened? Shame. 143 people have been killed. 10,000 people have, 65,000 people have Dismiss. They have fled out of the particular state. And 2 women folk have been striped, gang raped, and paraded the nude in the streets of Manipur, sir. Sir, it is worthwhile to say now, under 1,044 incidents took place. Women and children brutally killed. Where? It is not in Manipur, sir. It is in Ahmedabad, sir. The daylight they have been killed. When Honorable, our Prime Minister, the former Chief Minister of Gujarat was 2,500 people were missing. Majority are belonging to minority community. Shame. The whole civilized world was up in anger and condemned the Gujarat's drama in strong terms. Many fact-finding, impartial investigation revealed that merciless power politics, editorial and prescribed and targeted crimes, and CM of the day was accused of condemning violence, not condemning the violence. But your own party, Prime Minister Vajpayee, condemned the bloodbath and said, "Don't cross sacred line of Raj Dharma." So I quote the PTA story, sir. PTA story on 4/4/2002. Dharma, and make no distinction between the people on the basis of caste, creed. And further, he says, majority needs no protection. Majority is capable of safeguarding its interests. They have the number on their own. It is only the minority which needs protection, sir. This is what the same thing is happening here, sir. Nowadays, what has happened to Gujarati versus minority? The same thing is happening in Manipur. Majority versus minority. It has been inflicted upon the minorities by the majorities. The Chief Minister is helpless. He is looking to lukewarm. And the Prime Minister is not coming to the party, so he has not done that. Whereas the responsible India parties went to the Manipur and they have just understood what has happened, and that is why they are speaking loudly, sir. Late leader Vajpayee stood for the Raj Dharma, and we are standing behind the person who is doing the Raj Dharma nowadays, sir. But today we cannot stand behind them, because when women are gang raped, striped and nakedly paraded,
140 people were killed. 300 people were damaged. 65,000 people have already ran for shelter to the adjoining forest. And CM Manipur tell openly that 100 such incidents of naked parading had happened. Shame on the part of the Sir. Now, the whole world is condemned the happenings in Manipur in no uncertainties. European Union Parliament, they say discussion in European Parliament and British Parliament have condemned PM Modi's and his party very strongly. In the EU Parliament, six parliamentary group has appealed the European Parliament in their plea, whereas violence in India's Manipur state has erupted along ethnic and religious lines between the mainly Hindu Meitei community and Christian Kuki community, leading to a cycle of violence with over 100 people killed, over 40,000 displaced, and the destruction of the property and places, and so on, sir. Whereas in the latest rights groups have accused the BJP-led government in Manipur and nationally of implementing divisive ethno-nationalistic policies which opposes in particular religious minorities. Modi visit to US has castigated, US history has castigated 75 Democrats MPs for human rights violations in India. That is in US, sir. So lastly, I want to quote Narendra Datta, sir. Narendra Datta's speech. I quote, sir. Datta addressed the gathering as brothers and sisters. He has mentioned brothers and sisters, not ladies and gentlemen. The brothers and sisters has got more homely than ladies and gentlemen. I quote the speech. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanatism, have long possessed this beautiful earth. They have filled this earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nation. This is what the great man Narendra Datta said to the world. The man who introduced Hinduism to the world said these words, warning the world from disaster. He also quoted, I again quote, I am proud to belong to a religion which has taught me and world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and all nations of the earth. That is what he has told, sir. Finally, he says, it is Narendra Modi famed Hindutva, which the world witnessing today. This is nothing but Hinduism, where religious tolerance has no place. Your schemes of things has sent agendas like Citizenship Act amendment to drive away minorities and uniform civil code, etc. Sir. I quote finally, 474. அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவறியான் தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும். He who defies righteous order, oversteps limits, and enjoys self-aggrandizement gets lost fast. This is what I want to tell my close friend Narendra Modi ji. So the whole world has wanted him. He is going to meet, and also the Indian parliamentarians in this house, sir. Moreover, he is very aggressive and atrocious also during he's not attending the parliament, sir. Yes. How come? What right he is, sir? Public has elected him to come to parliament, and moreover, he is holding the position of prime minister. This is not fair on the part of him, sir. Near about 1 month, all the members of parliament belonging to
Every day in, day out, they are just making plea before them. And this ruling party is trying to support all these rules and regulations of the parliament and also the Constitution of India. Moreover, there is one person in our state. Finally, sir, there is one person in our state. Sir, Assembly is in session. Chief Minister and all the ruling party, all party, but before chanting national anthem, this man is going out, sir. Shame on the part of the governor who is ruling the state. It is not fair. So ESP governor and the home minister should take note of it. And governor should be condemned in all respects. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Professor Saugat Roy ji. Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress and its leader Mamata Banerjee, I rise to speak on the no confidence motion. I also speak on behalf of the India Alliance. I express confidence in which restored Rahul Gandhi's membership. Also, I express no confidence motion against this government. I have to say that I have nothing personal against Mr. Modi. But as Brutus said in Julius Caesar, not that I love Modi less, but that I love India. If anybody loves India, they will oppose Modi. Because his government has been a government of failed promises and disastrous policy decisions. Still, sir, I do not want to make it personal. I do not want to raise the question of Modi ji's educational qualification, over which there is a cloud. Want to speak on Gujarat riots or the BBC documentary on Modi ji on Gujarat riots. Sir, before going to my main point on Manipur, I want to mention that this government is destroying federalism in the country. Its purpose is to all state governments. West Bengal is a victim because Amit Shah went to Bengal and said, Agle bar 200 par. BJP could not even get 80 seats. So they have stopped all money for Narega, which amounts to 7,300, and for PM Awas Yojana, which amounts to 8,400 crores. Our party has given a call. If the money is not released soon, then on 2nd October, we shall bring lakhs of people to demand our share, our dues in respect of Marek. Sir, I do not want to reply to Mr. Nishikant Dubey. He is a man desperate to get into the ministry somehow or other. So he has to flatter the government. And it's a long history which I don't want to go into. But I want to remind him that he belongs to an organization which did not participate in the August 42 movement. He belongs to an organization and after Gandhiji's murder. I do not want to have any track with such organization and people representing it. Sir, before going further, I want to mention there are some ministers, sprinkling of ministers here, control themselves. Earlier, Anurag Thakur went to a meeting in Delhi and said, Goli maro, dash dash. And now Meenakshi Lekhi, minister from Delhi, is saying that don't speak against us, we shall send. I want to say that I come from the land of Tagore,
who said, don't fear. আমি ভয় করবো না দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না I shall not fear and I shall not die twice before dying actually. Sir, this government is a government of the heartless. They are sending delegates on any plea, but not one delegation has gone to Manipur, where our brothers and sisters are dying. Sir, I'll remind you of what Mark Antony said in Julius Caesar. You blocks, I'll paraphrase it and say, you blocks, you stones, what you worse than senseless things. Oh, gods, cruel men of BJP. You have no compassion. That's why you have not gone to Manipur as all the opposition parties have gone. Sir, let me say a few words about Manipur. My young friend, Mr. Gaurav Gogoi, has very ably summed up the situation in Manipur. Manipur ethnic clashes between Meiteis and Kukis started on 3rd May 2023 and are still continuing. On 5th August, 5 people, 3 Meiteis and 2 Kukis were killed in Manipur. So far, over 150 people have been killed. At least 100 women were raped and over 70,000 people have been displaced and 350 relief camps have been set up. The delegation from India which went met people in relief camps in Imphal and Churachandpur. Nishikant did not mention a single word about Manipur. This government wants to, sir, the actual count may be higher. And now these incidents in Manipur remind one of the riots in Rwanda between Hutus and Tutsis some years ago. The worst incident in Manipur came to light on 19th July when a video went viral. Women being stripped, paraded naked on the streets and sexually assaulted by apparently Meitei men. Sir, are we living in a civilized country that this happens to our sisters? This is unimaginable. No action was taken by the police for more than 2 months until the video emerged. This was down in Manipur, which, as Gaurav mentioned, is still continuing. The Prime Minister opened his mouth after 80 days since the start of violence, saying that his heart is full of pain and anger. But he has not visited Manipur till date. Now the Supreme Court has set up a 3-judge committee consisting of women judges. This is good because when the government fails, the highest court of the land has to take up the matter. Sir, till today are attacking Kuki villages who are retaliating with SLRs, AK-47, etc. Much of the arms are coming from abroad across a porous border and is funded by mainly poppy money, opium money. These armories are looted. The government led by BJP Chief Minister Biren Singh, who is a Meitei, has failed to maintain law and order. I demand that he should be immediately dismissed and President's rule imposed on the state. Sir, one interesting thing, you are a doctor from Ahmedabad, you will realize that what was the Prime Minister did from May to July this year when Manipur was burning. He visited 7 countries, in which USA from 20 to 23rd June, Hiroshima 20th May, Australia May 24, France July 13 to 14, UAE July 15, Egypt to see the pyramids 24 to 25 June, Papua New Guinea 24 to 25 July 2023.
I very proud that Joe and Jill Biden had Biden gave a private dinner at White House in his honor. हम कहते हैं ना साहब लोग पीठ ठोक दिया तो साहब लोग उस बहुत खुश हो गया और हमारे बहन लोग उधर उनको इज्जत छीना जा रहा है. This is our Prime Minister. Sir, is our Prime Minister a roving ambassador, traveling salesman? Because he even went to Sikar in Rajasthan to campaign in the midst of all this. Now, the Prime Minister has to reply why he was visiting foreign countries when Manipur was burning. So let me come to some other points. The major failure of the government is to check price rise. Price of tomato is at 250 rupees. It has failed to provide jobs. It is destroying social harmony. We have seen the communal riots in Nuh and Gurugram in Haryana. They are still continuing, destroying federalism. Sir, in Nuh, allegations are made that only Muslim houses are being demolished by bulldozers. Sir, is destroying federalism by sending useless governors to states to disturb state governments, as in West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra, and Delhi. Sir, the government has been weakening institution, Parliament to Election Commission. Modi to attend Parliament. He has not replied to a single question in Parliament. I have seen many other parliaments. I have never seen a man like him, who as Prime Minister does not reply to a single question. He does not believe in Parliament. And maybe सौगत राय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ मेंबर हो. सर, प्रधानमंत्री मैं जी तो का कोई खराब बात आप नहीं बोला. आप अविश्वास की दरख्वास्त पर बोलो. मैं तो कोई खराब बात- प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते हैं. ठीक इस है. प्रकार से बातें मत सर, करो. आपको- पर्सनल एलिगेशन मत आपको करो. आपका सर, आप बहुत बड़ा डॉक्टर है. आप बैठ सर, जाइए. आप बीजेपी के हैं, लेकिन बड़ा डॉक्टर है, इसलिए मैं आपको इज्जत करता हूँ. चुप कर बैठो. Sir, the central agencies, ED and CBI, they are used to target opponents and state government, as it happened in Maharashtra. BJP has a big washing machine. No, baitho. What? BJP has a big washing machine. When Ajit Pawar was in NCP, he was very 20,000 crore irrigation scam. Now BJP's washing machine he has entered. Now he has become a good man. Amit Shah goes and praises him. Sir, I talk about demonetization. One mad decision by the Prime Minister. It caused chaos. 150 people died standing in queues for changing notes. Many MSMEs were totally wiped out. Sir, on farm bills, press farm bills down the throat of the farmers. They resisted boldly, and ultimately government had to withdraw the farmer bills. But the farmers are still committing suicide. They are still committing suicide, and the promise to double farmers' income by 2022 is not fulfilled. Sir, being disinvested. Banks are writing off 14 lakh crores NPAs in the last 9 years. PSUs are being privatized, including profitable ones like the LIC. Sir, I'm coming to the end of my tether.
Such advantages are given to some industrial houses, Tatas, Ambanis, and Adanis. Adani got most of the airports, including Mumbai airport, by arm twisting, and then cement companies, and then land ports. Ambani's persuaded the government to stop import of laptops since it is bringing out laptops. There, Air India are now buying out Vistara. Government has not given a statement on the Hindenburg research report on the Adani share scam till today. The Prime Minister avoids all discussion on Adani in the House. So today, LPG cylinder cylinders, as you may know, cost is on petroleum product. Petrol now costs rupees 106 and diesel rupees 92 per liter in my city. Sir, the Prime Minister
एक पेपर निकाला था कि we will allow import of milk from abroad. When there is surplus in this country, यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है, तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है. How can we have confidence in this government, sir? How can we have faith in this government? Indian Raki, Indian, I'm not yielding. Modi ji, I will happy to table. Mr. Pawar had written to the minister, I'll be happy to table it. I will 100%. I will table it. I will table it if he is. I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers, and that ordinance, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. Prashant Bhushan ji, there's a tweet I remember where there were issues raised. अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ, health and survey index, India has gone down. Hunger index, down. Human freedom index, down. World happiness index, down. Environment protection index, down. Gender equality, down. Democracy, down. So many और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर. एंटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कितने आपको गिनवाऊं जा, आप तो थक गए मेरा भाषण सुन के. अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी because I think Saugata Babu has already spoken that point, so I won't repeat it. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. Horrific death of 288 people. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते, तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, डाउन, मीरा, बिगवन. सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है. नो स्टॉपेजेस. क्या करूं उस वंदे भारत का? ऐसी जाती है जब से 1 सेकंड में. बस देखिए जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना, तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी. ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है. और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है. जहां डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहां का किसान पूना जाता था, वहां का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहां जाता था, वहां के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट, वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे. आज एक दिन भी नहीं रहती, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती. हम स्टॉपेज मांग मांग के थके. और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था, उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुकी, न वंदे भारत रुकी है. बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया. मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है. मैं और बोलना चाहती हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है आज, जिसके बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर रॉय बोले. इंक्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, इकोनॉमी की बात बोलते हैं, 55.87 लाख करोड़ 2014 में था, विच हैज बिकम 155.6 लाख करोड़ is the debt of this government. 178.5 times central debt. How are we going to pay this? This is central government debt. There's external debt. External debt in India has gone from USD 6 to 4.7 billion at the age of March 23, from US 440, 41% interest. How are you going to pay this? By selling the family silver. फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेचते, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार. This is why we are no confidence in this motion. How is this economy going to work? Cash in circulation, demonetization कर दिया, कोई cash नहीं करेगा. Cash in circulation today has increased. It was 12 point. फिर ये कह देंगे economy का size बढ़ गया, but percentage of the money is the same. How are you saying cash in circulation was 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. So demonetization करके क्या पाया आपने? Non-performing assets, 18.2 lakh crores. Non-performing assets. ये अगर write off कर रहे हो, तो किसान का भी कर दो. ये किसका आपने 18.2 lakh crores, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं. इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती. Another thing, India renouncing Indian citizenship. High net worth individuals, 12 lakh have left this country. How will the economy grow of this country? Doubling of farmers. Now,
if these are the questions, how can we trust this government? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है. How can we support this government? साहब आप बताइए. Now is the main 2 minutes only. Last point, sir, which is the most important. That's why ये सब हुआ. Is this shameful blunders in Manipur of the state government? And I demand that just today after this, the chief minister must resign. How can you allow this? Sir, how this is? People dead, 179. People displaced, 60,000. Relief camps, 350. Still in camps, 40,000 people. Houses burnt, 3,662. Religious places burnt, 321. Companies the companies of Central Force deployed, 161. And cases of rioting, murder, rape, 10,000, sir. 10,000 se zyada. Have we become so insensitive? This is the problem with this government. And I want to seek a clarification, which Gaurav Gogoi touched in a very small way, because I'm very confused. So I would like to ask this question to this government, that there is a PIL filed in the NI court. This Mr. Haukip, I may be pronouncing his name wrongly, of the United Kuki Liberation Front said that he had written to the Home Minister Amit Shah ji regarding a claim that UKLF, the United People's Front, had helped BJP candidates win in 2017 assembly as per arranged with some other chief minister. I don't want to name it. What is the, and a senior BJP leader. Now, these are organizations which are grey. So is this government anti-national? Is my question. I'm asking a question. I'm not making an allegation. This is what is come in newspapers. I'm not commenting on anything that's gone wrong anywhere. I want to ask that Mizoram today are women. Doesn't matter who they are, they're Indians first. Yes. किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहू है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है. Will you allow this to happen and shame the women of this country? And this is what this government stands for. How can you ask your conscience, अंतरात्मा से एक बार पूछ लीजिए, how can you support a government like this? This is not about them versus us. This is about the dignity of the woman of this nation. उसकी इज्जत उछालोगे and the government is going to keep quiet. How are you going to allow? I'll make one small solution to this government. What should this government really do? हर देश में किसी की भी, महाराष्ट्र में भी हो भी किसी, राजस्थान की हो, किसी की भी हो, वो किसी की भी बेटी है. Two wrongs don't make a right. And I would like to quote just one small point, sir. Please. I would like to make a suggestion to this government. Okay. I'm not only criticizing, I'm making a suggestion. I would like to quote the Mahatma in this. It says, I offer you, what should they do now? Is what I'm referring to them. What should they do? I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings. My wisdom flows from the highest source. I salute that your source in you. Let's work together for unity and peace. That's what Manipur needs. These guns are not going to solve all our problems, sir. And again, I want to remind this government that 2024 is their only goal. I'd like to quote Julius Caesar, just since Mr. Professor Roy talked about it. It's only hubris if I fail. In the epic poem Paradise Lost by John Milton, the character of the Satan displays hubris when he attempts to rebel against God's rule in heaven, and when he eventually declares that it's better to reign in hell than serve in heaven. So I think this government needs to rethink. I stand here by India for the larger good of this nation and the dignity of every citizen who deserves it, and this government is failing the poor and the honest people of this country. Thank you. सभापति महोदय, कि आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी पार्टी की ओर से अपना मत प्रकट करने का यहाँ पर अवसर दिया. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2018 में ही कहा था कि विपक्ष जो है मेरे खिलाफ जो है 2023 में अविश्वास प्रस्ताव जो है लेकर आए, और आज वैसे ही हो रहा है. 2018 में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, और 2019 में 2014 से भी ज्यादा जो है सांसद सदस्य एनडीए के यहां पर चुनकर आए, और 2014 में
एनडीए की सांसदों की संख्या थी 336 और 2019 में वो पहुंची 353। और फिर से आज अविश्वास प्रस्ताव जो है यहां पर लेकर आई है विपक्ष। फिर से 2024 में जो है ये संख्या जो है 400 पार हो जाएगी। आज यहां पर चर्चा जो है अविश्वास की नहीं, यहां पर चर्चा जो है वह अविश्वास के खिलाफ जनविश्वास की है, क्योंकि जनविश्वास जो है वो एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। आपके खिलाफ तो 2 बार लोगों ने ही अविश्वास प्रस्ताव जो है 2014 में और 2019 में पहले ही पारित कर चुकी है, और अभी 2024 में जो है जनता जो है हैट्रिक करने जा रही है। महोदय, इन्होंने अपना नाम जो है यूपीए का बदलकर इंडिया अलायंस कर दिया है। इन्हें लगता है कि इंडिया नाम रखने से जो है भारत के लोग इनके साथ हो जाएंगे, लेकिन मुझे यहां पर कहना है कि इन्होंने नाम जो बदला है यूपीए, क्योंकि यूपीए की नाम की इनको शर्म आती है, क्योंकि यूपीए जो है, यूपीए का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जो है स्कैम, घोटाले, भ्रष्टाचार याद आते हैं लोगों को। 2G घोटाला हो, अगस्ता स्कैम हो, आतंकी हमले हो, रिमोट कंट्रोल वाली सरकार हो। इसलिए 2014 में लोगों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो है मोदी जी को जो है इस देश की कमान सौंपी। आज यहां पर ये कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मुझे लगता है कि एक आदमी के विरोध में ये सभी लोग जो है इकट्ठा आ रहे हैं, जिसका कोई नेता नहीं है, जिसकी कोई नीयत नहीं है और जिसकी कोई नीति नहीं है। ऐसा अलायंस जो है यहां पर खड़ा हुआ है। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 ने देश पर राज किया, लेकिन देश को क्या मिला? सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार। आतंकी हमले इतने हुए कि एक भी इस देश का बड़ा शहर जो है इस आतंकी हमलों से बचा नहीं। आ रहा उस पर भी। आज ये इंडिया अलायंस, नाम इंडिया देखकर समझते हैं कि लोगों को जो है डेमोक्रेसी के नाम पे यहां पर बहलाया जा सकता है। आज इस इंडिया अलायंस में हर एक नेता जो है पीएम इन वेटिंग है। हर एक नेता को लगता है कि मैं पीएम बन जाऊं, क्योंकि इस टीम के पास कोई कैप्टन नहीं है। कोई कैप्टन नहीं है और इनको मैच लड़नी है और वर्ल्ड कप जीतना है। हमारे मराठी में एक कहावत है, ऐकली पाहिजे आपण, अडला हरी गाढवाचे पाय धरी। इसका मजबूरी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष नहीं, ये अलायंस नहीं, ये विनाश का गठबंधन है। यहां पर सिर्फ एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि स्कीम वर्सेस स्कैम की लड़ाई है। यहां पर गए अनेक यूपीए 1 और यूपीए 2 और उसी के साथ में गए 10 साल में एनडीए के अलायंस में हमने जो उपलब्धियां यहां पर हासिल की, और इनकी जो उपलब्धियां है वो मुझे, मेरे पास जो है ए से जेड तक जो है यहां तक इसकी सूची है। इनके समय ए से आदर्श स्कैम होता था, एनडीए के समय ए से आत्मनिर्भर भारत, बी से बोफर स्कैम, यहां पर बी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी से कॉमनवेल्थ गेम्स, यहां पर सी से क्लीन एयर प्रोग्राम, डी से डीएलएफ लैंड ग्रैब्स केस, यहां पर डी से डिजिटल इंडिया, ये ई से ईपीएफओ स्कैम, यहां पर ई से एनर्जी रिफॉर्म्स, एफ से फॉर्डर स्कैम और यहां पर एफ से फेम स्कीम।
जी से 2G स्कैम, यहाँ पर गोकुल मिशन, और H से हर्षद मेहता स्कैम, और यहाँ पर हाउसिंग फॉर ऑल। ऐसी बड़ी सूची है, ये Z तक है सूची। अगर ये भूल गए रहेंगे, आज बैठे नहीं यहाँ पर। आज यहाँ पर मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर में जो हो रहा है हम सबके लिए चिंता का विषय है, इसकी हम निंदा करते हैं और इस पर गंभीरता से विचार होना जरूरी है और कार्रवाई भी होनी जरूरी है। विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर राजनीति करना चाहता है। 2014 तक नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 4 राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी और 1 राज्य में जो है लेफ्ट की सरकार थी। आज तकरीबन सारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एनडीए के साथ है, क्योंकि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी गंभीर नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर जो है एनडीए, मोदी जी का हाथ जो है नॉर्थ ईस्ट ने थामा। आज वहां पर केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस नॉर्थ ईस्ट में जो है 50 से ज्यादा बार जो है वहां पर जा चुके। यहां पर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा पीस अकॉर्ड हो 2019, बोडो पीस अकॉर्ड हो 2020, ब्रू रिहेबिलिटेशन अग्रीमेंट हो, आसाम मेघालय बाउंड्री अग्रीमेंट हो, ये सब बड़े कार्य जो है 2014 से 2023 के बीच में जो है सरकार ने की। यहां पर डेवलपमेंट का अगर विषय ले तो 2014 से 2019 मात्र 5 सालों में यहां पर 2731 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यहां पर बनाए गए, और 2009 से 2014 10 सालों में मात्र 1000 किलोमीटर के मार्ग यहां पर बनाए। यहां पर 65 सालों में सिर्फ 9 एयरपोर्ट थे 7 राज्यों के लिए, इसकी संख्या बढ़कर जो है आज 16 हो गई है। 2014 से पहले यहां पे रेलवे बजट का आवंटन सिर्फ 2000 करोड़ था, लेकिन आज जो है इसका 10,200 करोड़ का रेलवे आवंटन जो है बजट जो है इसका है। ये अंतरिक्ष सुरक्षा के बारे में यहां पर बात कर रहे। यहां पर मुझे लगता है कि जिन्होंने इस देश पर 65 साल तक राज किया, यूपीए कार्य में 10 सालों में जितने आतंकी हमले यहां पर हुए, मुझे लगता है कि हर एक बड़ा शहर जो है यहां पर उसके ऊपर जो है आतंकी हमले हुए। 2006 में मुंबई ट्रेन बम विस्फोट हो, यहां पर गौरव गोगोई जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मौन है। मैं पूछना चाहता हूं, गौरव जी को यहां पर नहीं है वो अभी, कि 2006 में मुंबई में ट्रेन विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था? 2008 में जयपुर बम विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था? यहां पर 2008 में बेंगलोर में सीरियल ब्लास्ट हुए तभी कौन मौन था? यहां पर 2008 में मालेगांव बम विस्फोट हुआ तभी कौन मौन था? यहां पर मुंबई में जो फाइनेंशियल कैपिटल है वहां पर 26/11 हुआ तभी कौन मौन था? और 2010 में था, 2013 में हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुए तभी कौन मौन था? ये जवाब भी जो है मुझे लगता है तभी कौन मौन था? सिर्फ रिटेलिएशन के नाम पर जो है हमेशा चिट्ठी लिखकर जो है अपनी नाराजगी प्रकट करते थे, लेकिन जब पुलवामा हुआ तभी बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने उत्तर दिया। जब भी उरी हुआ तभी सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है मोदी जी ने यहां पर दुश्मनों को उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी चिट्ठी और मैसेज के दिन खत्म हो गए, अभी कुछ करेंगे तो सीधे मिसाइल आएगी। आज यहां पर मनीष तिवारी जी नहीं है, मनीष तिवारी जी ने अपने एक बुक में लिखा था 26/11 के बारे में, फॉर अ स्टेट that has no compunctions in brutally slaughtering hundreds of innocent people, restraint is not a sign of strength, it is perceived as a symbol of weakness. There comes a time when action must speak louder than words. 26/11 was one such time when it just should have been done. ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं, तो आज इनको जो है मोदी जी को ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो है मौन है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आज देश जो है मोदी जी के हाथों में
बहुत सुरक्षित है। इसलिए पूरे विश्व में यह संदेश गया है कि मोदी सरकार आतंकियों के सामने जो है झुकने वाली नहीं है। यहां पर गए 9 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैं यहां पर बताना चाहूंगा। गए 9 सालों में जो है नेशनल हाईवेज 54,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जो है बनाए गए। एयरपोर्ट्स की संख्या जो है 74 से बढ़कर जो है 148 हुए। रेलवे जो है 1218 रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन हुए। वंदे भारत जो है ट्रेन यहां पर शुरू हुई। स्मार्ट सिटीज बनाए गए। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है महिला सम्मान को देखते हुए हर घर जो है शौचालय बनाने का काम यहां पर किया। और स्वतंत्र के बाद आज तक लोगों को नल से जल नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो यहाँ पर जो है लोगों को हर घर जो है नल से जल देने का काम जो है यहाँ पर सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत हो और कोविड में जो है 2 बिलियन वैक्सीनेशन जो है इस देश में कराए गए और मैत्री के अंतर्गत जो है बाकी देशों में भी जो है 29 करोड़ वैक्सीन जो है मोदी जी ने भेजे यहाँ पर। आज हमारी इकोनॉमी जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो है 40% हमारा हिस्सा है। स्टार्टअप में 108 नए यूनिकॉर्न्स यहाँ पर बने हैं। एफडीआई में भी नंबर आगे है। तो ये जो है ये उपलब्धियां जो है गए 9 वर्षों की है। मैं कुछ अभी महाराष्ट्र से आता हूं, मुंबई से आता हूं, तो महाराष्ट्र की बात यहां पर करूंगा कि किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र में गए 2.5 साल में जब ये सरकार थी तो किस प्रकार से काम जो है यहां पर हो रहे थे, किस प्रकार से जो है वो केंद्र के सभी प्रोजेक्ट जो है यहां पर रोकने का काम जो है यहां पर गए 2.5 साल में जो है ये सरकार कर रही थी। बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो हो, इनके खुद के सरकार में मुंबई नागपुर जैसा महामार्ग हो, उसको भी रोकने का शुरुआत के कालों में जो है इन्होंने कोशिश की। कारशेड जो है यहां पर मुंबई में कारशेड एनवायरमेंट के नाम पर जो है कारशेड बनने इन्होंने दिया नहीं, और आज वो कारशेड जो है आरे में नहीं बनने के कारण 10,000 करोड़ जो है ज्यादा लागत जो है आज मेट्रो में लगने वाली है। ये किसके जेब से पैसे जाने वाले, किसके जेब से पैसे जाने वाले हैं? जो टैक्स भरते हैं उनके जेब से पैसे जाने वाले। ऐसा काम जो है यहाँ पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनको जरूरत नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर जो है रोक लगाने का काम इन्होंने किया, क्योंकि घर के बाहर ये निकलते नहीं थे, इनको इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं थी। एक गए 2.5 सालों में जो है एक अलग रिकॉर्ड जो है इस महाराष्ट्र में प्रस्तापित हुआ। निशिकांत जी, 2.5 साल में जो है 2.5 साल में एक नया रिकॉर्ड यहां पे बनाया कि 2.5 साल में सिर्फ 2.5 दिन मंत्रालय जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। ऐसा काम जो है यहां पर गए 2.5 साल में शुरू था। आज कुछ लोग जो है यहां पर, मैंने सुना परसों भी कह रहे थे कि गद्दार लोग के बीच में जो है यहां पर अमित शाह जी बैठे। मुझे पूछना है इनको कि 2019 में